Okay. So the first question is a beam of vertically polarized light is incident normally on a polarizing filter as shown in figure 5.1. ठीक है? So this is a question from the plane polarization one. So we have a vertically polarized light beam and it passes through a vertical polarizer. Now, the transmission axis of the filter is initially vertical. The filter is then rotated through an angle of 360 degrees. So, we are gradually rotating this filter. So, let's say then it becomes horizontal, then it's upside down vertical, then it again becomes horizontal in this direction, and again it becomes vertical. On figure 5.2, sketch a graph to show the variation of the intensity of the light in the transmitted beam with the angle through which the transmission axis is rotated. Okay, since the beam of light itself is vertical, so when the angle is zero or when it is at a vertical position, so at that point the intensity of the light will be maximum because all of the light will be able to pass through the filter. So we will have a maximum value at this point. Then when you rotate the filter to 90 degree, so intensity gradually decreases. So when it is exactly at the 90-degree position, so your value becomes 0. And when it is again vertical, but this time in the opposite direction, but the vertically polarized light will still be able to pass through, so we will have a maximum value at 180 degrees. Then again, when it becomes horizontal, so the intensity of the light beam becomes 0, and when it is again 360 degrees complete, so the value again becomes maximum. Okay? Acha, what was the formula? I is equals to I naught cos square theta. ठीक है? So if you guys remember, I told you that when you put the value of theta as 0, so cos 0 is 0, intensity should be maximum, we got the value. When the value of theta is 45, so what is the answer? I naught cos 45 whole square. So cos 45 is is under root 2, it's 1 over under root 2. So 1 over under root 2 का square ले तो half होता है. So the intensity is half. So it means कि 0 and 90 के between we will have a half of the maximum value. And similarly, between 90 and 180, we will have a value which is half of the maximum value. So we will have half of these maximum values between the maximum value and the zero wala point. Now, since it's a cosine equation, it's a cos equation, so it is going to be a cosine curve like this. So this is how the curve looks like. Okay? So ये आपके पास this is for 2 marks. So basically he was just saying that we have a beam of vertically polarized light. When the beam is vertical, since the polarized light is also vertical, so all of the light will be able to pass through. So at zero angle, it will have a maximum value. When this rotates through a 180, it again becomes vertical. So it will again have a maximum value, and again 360 पे भी it gets a complete maximum value. When it's 90-degree rotated, so vertical polarized beam will be stopped by the filter. So the value becomes 0, intensity of the light becomes 0, and between 0 and 90, matlab at 45, the value is going to be half of the maximum value, and it's going to be a
cosine graph. The intensity of the light in the incident beam is 7.6 watt per meter square. So the intensity is given to us 7.6 watt per meter square when the transmission axis of the filter is at an angle theta to the vertical. The light intensity of the transmitted beam is 4.2 watt per meter square. So I naught is this, and after transmission we used to call it I. So I is 4.2 watt per meter square. So we have to calculate the angle theta. So we have to use this formula. I is equals to I naught cos square theta. I is the transmitted intensity. I naught is your initial intensity. So transmit कितनी हुई है 4.2, initial intensity कितनी है 7.6, cos of theta is to be found. Now 7.6 उधर ले जाके divide, and we are left with cos square theta on this side. Then take square root on both sides as well. So what do we get? ये स्क्वायर रूट ऑफ 4.2 ओवर 7.6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.743. ठीक है, 0.743. नाउ वी हैव टू टेक इनवर्स of 0.743, and once we take the inverse of it, so the value is going to be 42.01. 41.97, and we have to give the final answer to two significant figure, so the value of theta is 42 degrees. Now in the next part, state what is meant by the diffraction of a wave. So diffraction of a wave means this, it means spreading of wave after passing through a slit, or a gap. ठीक है, सो बेसिकली डायफ्रैक्शन का मतलब क्या था? ये आपके पास एक वॉल है, एंड वॉल में लेट्स से देयर इज अ गैप इन द वॉल. These were the wave fronts, and when these wave fronts, when they try to pass through this gap, so they spread, or they are bent as well. Okay, so this phenomena is called as the diffraction of a wave. Now, part C, a beam of light of wavelength. So wavelength is given, lambda is known, is incident normally on a diffraction grating in air as shown in figure 5.3. So angle is also given, third order small n is also known. Third order diffraction maximum of light is at an angle of 68 to the direction of the incident light beam. ठीक है, calculate the line spacing d of the diffraction grating. ठीक है, so what was the formula? Formula is n lambda is equal to a sine theta. A is actually the line spacing. N is the nth order, which is 3. Lambda wavelength कितनी है? 4.3 times 10 to the power of minus 7. Line spacing is A, which is denoted by D here. So D times sine of angle is 68. So make D as the subject, sine 68 उधर ले जाके divide कर दो. So put the entire expression on calculator and you will get the final answer for D as well. Okay, so yeah. 1.39 multiplied 10 to power minus 6. Acha beta, if you have any question, just drop me a message on the WhatsApp. I'll respond back to your query from there. Okay? Now determine a different wavelength of visible light that will also produce a diffraction maximum at an angle of 68 degrees. ठीक है? So we have to find a different wavelength
डिफरेंट वेवलेंथ हमारे पास तभी होगी अगर आपके पास उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता। ठीक है, मतलब अगर लेट्स से अगर मैं इसकी वेवलेंथ चेंज करता हूँ ना, तो सेम एंगल पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम प्रोड्यूस हो इंस्टेड ऑफ अ थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम। So this time, let's consider the value of n as 2. Lambda is to be calculated. The line spacing, what did we got? कितनी आई है? पिछले पार्ट का आंसर क्या आया था? So we use the same formula again. N lambda is equals to A sine theta. So this is A actually, जो D जिसको उसने D से डिनोट किया हुआ। सो नाउ N इज 2, ठीक है, लेमडा इज टू बी कैलकुलेटेड। ए की जो वैल्यू आपने लास्ट पार्ट में फाइंड की है, वी कैन जस्ट सिंपली यूज दैट। ठीक है, 1.39 टाइम्स 10 to the power -6. So 1.4 times 10 raised to the power of -6. So 1.39 times 10 raised to power -6 times sine of 68. ये 2 lambda से multiply हो रहा है, shifted to the other side. It will be divided and we get the final answer. Okay? So you calculator में you can just simply put the expression and calculate the value as well. Okay? I hope it's clear to everyone now. Okay, so this marks the end of this question. Now let's just move on to the सर G beta. So सर ये G G सर ये कैसे पता लगा कि ना n की पावर 2 होगी? इसमें इसमें 4 भी तो हो सकते थे। कि किस चीज का n की वैल्यू का पूछ रहे हो कि n की वैल्यू 2 क्यों कंसिडर की है? जी सर। अच्छा, देखो बेटा, अगर आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में वेवलेंथ चेंज करते हो ना, तो जिस पोजीशन पे थर्ड ऑर्डर है उस पोजीशन पे सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है। उसने आपसे कहा है डिटर्मिन अ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट दैट विल ऑल्सो प्रोड्यूस अ डायफ्रैक्शन मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 68 डिग्रीज। ठीक है, तो हम वी ऑलवेज कंसिडर कि उससे एक कम ऑर्डर वाला जो है ना, हम वो यूज करके देखें कि व्हाट इज द वेवलेंथ दैट वी गेट। ठीक है, सर हमेशा ऐसे ही और होगा? बेसिकली वी ऑल्सो अब देखो, मैं एन की वैल्यू अगर इफ आई कंसिडर द वैल्यू ऑफ एन एज 1, सो आई माइट गेट अ वेवलेंथ विच इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ द विजिबल लाइट। ठीक है, अगर मैं लेट्स से एन की वैल्यू 1 देता हूँ, तो मेरे पास जो वेवलेंथ आएगी हो सकता है कि वो इस विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ की रेंज होती है, व्हाट इज द रेंज ऑफ wavelength of visible light from 400 nanometers to 700 nanometers. Okay, so 700 nanometers means 7 into 10 raised to power -7. If I consider the value of n as 1, तो मेरे पास ये आती है वैल्यू 13 टाइम्स 10 की पावर -7। और अगर मैं उससे नीचे चला जाता हूँ बहुत, तो हो सकता है कि उसकी जो वेवलेंथ है बेटा, वो उससे मैं एन की वैल्यू 4 इसलिए नहीं कंसिडर कर सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 4.3 है, तो वेवलेंथ और कम हो जाएगी, तो वो 400 से भी नीचे चली गई, सो वो लाइट की रेंज से बाहर हो जाएगी। दिस इज द रीजन कि द वैल्यू ऑफ एन इज कंसिडर्ड टू बी 2। ओके सर। ये बात समझ आई है? इफ यू वांट तो मैं इसको सॉल्व करके वर्किंग के साथ दिखा देता हूँ। लेट्स से इफ आई कंसिडर एन एज 4, सो लेमडा विल बी इक्वल टू 1.39 टाइम्स 10 की पावर -6 टाइम्स साइन ऑफ 68 whole divided by 4. So what is the wavelength that we get?
So 3.2 times 10 raised to power negative 7 meter, which is not in the range of the क्या कहते हैं विजिबल लाइट. ठीक है. नैनोमीटर्स की टर्म में याद है तो यू ठीक है. अदरवाइज 4 into 10 raised to power -7 से लेके 7 into 10 raised to power -7 मीटर तक की वेवलेंथ की जो रेंज है इट इज पॉसिबल फॉर द लाइट. ठीक है. तो और दूसरी चीज ये भी हमें पता है कि लेमडा और एन हैज एन इनवर्स रिलेशन. ठीक है. तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी जो nth ऑर्डर है वो उतना कम होता जाएगा. एंड सेम इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ n एज 1. ठीक है. सो नॉट इन रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. Similarly, if you consider the value of n is as 1, इसको डबल करूँ तो वो आती है 13 into 10 raised to power -7, which again exceeds the range of the wavelength of the visible light. सर हम थ्री थ्री तो भी तो ले ऑलरेडी सकते उसने थे. लिया हुआ था ना, तो थ्री में तो वही वेवलेंथ आ जाएगी. So we have to find another one, another wavelength. That is why we considered the value of n as 2. So you have to basically check as well whether your wavelength lies in the range of the light or not. Okay? Okay, now let's just move on. Let's move to the next question. We will do this one as well, but let's do this first. Coherent visible light of a single frequency is incident normally on a double slit. This produces a pattern of bright and dark interference fringes on a screen as illustrated in figure 6.1. ठीक है. So if we look at the diagram, तो ये क्या है? What ये distance क्या है? 1.2 मिलीमीटर वाला स्मॉल है. स्लिट सेपरेशन दी हुई है. सो स्लिट सेपरेशन क्या है? 1.2 टाइम्स 10 की पावर -3 मीटर्स. अच्छा, ये क्या दिया हुआ है? 3.1 मीटर क्या है? It is capital D, which is the distance between the slits and the screen. Okay, now ये हमारे पास बहुत सारे टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है x से लेके y तक का. We need the fringe separation between two consecutive bright fringes. So we need to find x. How many x's are there in 10.2 millimeter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6. ठीक है ना? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So x will be 10.2 millimeter divided by 6. So what do we get? अच्छा, अभी मुझे उसने कुछ भी नहीं कहा हुआ था तो मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने कन्वर्जन अपनी कन्वीनियंस के लिए स्टार्ट कर दी है. और मिली के लिए आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 10 की पावर -3. सो वी गेट 1.7 टाइम्स 10 की पावर -3 मीटर. सो वी हैव ए डी एंड एक्स. एंड इससे अगर मुझे जैसे ही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात होगी तो फौरन मेरा जेन क्लिक करना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकेंगे. लेमडा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर डी. सो प्रॉबेबली ही विल आस्क अस टू फाइंड आउट द wavelength. Okay. Now there are 7 bright fringes. Explain how the pattern of bright and dark interference fringes is formed. ठीक है जी. When you divide 10.2 with 6, it's 10.2. You wrote 1.2 with that. सर वाई विथ 6. Okay? Okay. अच्छा, so explain how the pattern of bright and dark fringes is formed. ठीक है. So हमारे पास सबसे पहले तो क्या होता है कि जो लाइट है, the light is passing through these double slits, right? ठीक है. तो उसके बाद जो लाइट है, light diffracts
after passing through both slits. ठीक है, through both slits. So we'll get 1 mark for this. कि जैसे ये light, when it passes through these gaps, the light is what? It's just diffracted. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो डायफ्रैक्टेड लाइट होती है, ठीक है, दे मीट एट द स्क्रीन. सो लाइट मीट एट द स्क्रीन. सो जब ये स्क्रीन पे आपस में मीट करती है, इंटरफेयर करती है, बेसिकली सुपर पोजिशन होती है ना, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है ऑन द स्क्रीन. ठीक है, सो लाइट मीट एट द स्क्रीन एंड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स अकर. ठीक है, सो जब ये कंस्ट्रक्टिव, अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास कब होती है? जब हमारे पास जो उसका पाथ डिफरेंस है या फेज डिफरेंस जो है, व्हेन इट इज इक्वल टू 2n पाई रेडियंस. ठीक है, सो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? मैक्सिमम. और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है? जब आपके पास n पाई के इक्वल होता है आपका जो फेज डिफरेंस है. सो वी विल राइट, सो एंड कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव अकर फेज. अच्छा, वी could just talk with respect to phase difference of zero produce maxima and phase difference of, अच्छा, 0,2 पाई 4 पाई लिख देता हूँ. ठीक है, 0 2 पाई 4 पाई इस तरह होगा. सो इट प्रोड्यूसेस अ मैक्सिमा एंड फेज डिफरेंस ऑफ पाई 3 पाई 5 पाई प्रोड्यूस अ मिनिमा. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू एक्सप्लेन. सो बेसिकली what happens when the light travels through these two slits? The light is diffracted. Now this diffracted light will meet at the screen. When they meet, so either constructive interference will take place or destructive interference occurs. So constructive interference कब होती है? When the phase difference is 0 2 pi 4 pi radians. So and it produces a maxima, or maxima means a bright fringe, and when the phase difference of pi 3 pi 5 pi occurs, it produces a minima or it produces a dark fringe. So 1 mark is if you write कि phase difference of 0 2 pi 4 pi produce maxima, and 1 mark specifically कि if the phase difference produces pi 3 pi 5 pi. ठीक है, so it produces a minima. जी, I hope it's clear to everyone. Okay, any questions? Okay, we'll do the next part. So the distance between the centers of the bright fringes x and bright fringes y and the pattern is, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन ये ऊपर डायग्राम में बनी हुई थी, ये उसने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है. क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है? सो वी हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. सो वी जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूला lambda equals to ax divided by
capital D. So A क्या था 1.2 into 10 की power -3, and what is the value of x? X is 1.7 times 10 की power -3. And what is the value of capital D? So that is 3.1 meter. Just put the whole expression on your calculator and you will get the final answer from there. ठीक है? This And that this is, point sorry, this point five eight six beta. point five eight. The value turns out to be 6.6 times 10 raised to the power of -7 meters. So this is going to be the wavelength. So 3 mark है, 1 mark if you write the correct formula, 1 mark if you uh, put the values correctly into the formula with correct conversion. मतलब मिलीमीटर को मीटर में किया हो, x की वैल्यू भी करेक्ट हो, and 1 mark absolute for the answer. Okay? Now let's move on to the next question. The light is replaced by different visible light with a shorter wavelength. State how the new fringe separation will compare to the original fringe separation. Okay, wavelength is shorter and he's asking us to compare it with the fringe separation. What is the formula? Lambda is equals to ax over d. ए और डी को कांस्टेंट कर देता हूं. सो लेमडा और एक्स का आपस में क्या रिलेशन है? लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. अगर वेवलेंथ शॉर्टर होती है सो फ्रिंज सेपरेशन जो है वो भी आपके पास शॉर्टर होगी. ठीक है? सो द फ्रिंज सेपरेशन इज ऑल्सो लेस. ओके, सो वी विल राइट फ्रिंज separation decreases. Okay? अच्छा, अब P, Q and R on the a stationary wave is formed on a stretched spring AB as shown in figure 6.2. P, Q and R are points on the string. So this P, Q and R, they lie on this string. On figure 6.2, draw a cross to show the position of a node. तो नोड कहाँ पे होता है? आपके पास ये जो मीन वाली लाइन नजर आ रही है, सो नोड कैन बी एनीवेयर ऑन दिस. ये नोड है. ठीक है, ही जस्ट आस्क अस टू मार्क इट विद अ क्रॉस. सो यू कैन ऑल्सो मार्क इट here or at A as well. Okay, now he's asking us to state the phase difference between P and Q. So we have to state the phase difference between the points P and Q. ठीक है? So ये general wave है. If we look at the displacement of point P and Q, तो P and Q का जो displacement है, displacement क्या मतलब, अगर let's say if this is the y-axis and that is your x-axis, ठीक है? So if you look at these 2 points, so their displacement is same. So if the displacement is same, so that means कि the phase difference between these 2 points is 0. If we compare, then he says state the phase difference between P and R. So P का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और R का नेगेटिव है. तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाने के लिए इट रोटेट्स थ्रू 180 डिग्रीज. ठीक है? सो what is the phase difference between P and R? That is 180 degrees. ठीक है? I hope it's clear to everyone this part. Okay? Sorry? For Q and, yeah. For Q, where is Q? For Q and
यस। और तो नहीं कोई ज्वाइन कर रहा था, बस वो एक टक टक आवाज आई है, मैं उससे हुआ था कि मे बी somebody है। हाँ ठीक है, nobody else is ओके। आई होप ये समझ आ गया अब आप लोगों को कुछ कुछ के मतलब हाउ वी आर सपोज टू डील विद दीज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस जो है। जी बेटा। सॉरी। नहीं, वेवलेंथ शॉर्टर है ना, और वेवलेंथ और फ्रिंज सेपरेशन का जो रिलेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट इनवर्स। लुक एट दिस फॉर्मूला, lambda is equal to ax over here. Yes. ठीक है, so the formula is actually the same. This is why. Just give me 1 second. जी, is it clear? I just wanted to check. Sorry. Okay, so moving on to the next question. State the principle of superposition. Superposition principle क्या था कि uh, when two waves traveling in the same direction, when two waves of same type traveling in the same direction meet at a point, so resultant displacement is the sum of the individual displacement. ठीक है? Two waves of same type traveling, ठीक है, in same direction meet, so resultant displacement is sum of individual displacements. ठीक है? Okay, so that was the definition for the principle of superposition. Coherent light is incident. ठीक है? Coherent light क्या होती थी? Such type of waves which have a constant phase difference. So coherent light is incident normally on two identical slits x and y. Again, we can clearly see that A दिया हुआ है 0.65 into 10 की power -3, कैपिटल डी इज गिवन, और इस बार दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का गैप है, सो एक्स इज ऑल्सो गिवन 1.7 इंटू 10 की पावर -3. सो पहले पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ, सो वील डू द सेम. use the formula lambda equals to ax over d. A is 0.65 times 10 की पावर -3, x is 1.7 times 10 की पावर -3, whole divided by 1.9. Just put the whole expression on the calculator and we get 5.8 times 10 की power -7 meters. ओके, तो ये पहला 3 मार्क का तो ये पार्ट सिंपल वही था जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही सवाल किया. नाउ light waves from X and Y in part B arrive at a point between adjacent bright fringes on the screen. Figure 4.2 shows the variation of displacement with time for the waves arriving at the point where they meet. So we have two different waves, wave X and we have wave Y. Student makes two statements about these waves at this point. So the first is statement is the phase difference between the waves is 90 degrees. ठीक है? Statement 2 is the amplitude of resultant wave is 0. ठीक है? Okay. So explain how statement 1 is correct. ठीक है? So if we look at these two waves, wave X and wave Y,
ओके सो उसने पहली स्टेटमेंट उसने कहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज 90 डिग्री सो देर इज अ फेज डिफरेंस क्योंकि एक वेव जो है वो आगे है एक वेव पीछे चल रही है ना जैसे इफ वी लुक एट वेव वाई सो वेव वाई इज अहेड फ्रॉम वेव एक्स right? So look at the graph. So since wave y is ahead from wave x, so that means that both of these waves are out of phase. So wave x and y is out of phase. ठीक है सो वाई दे आर आउट ऑफ फेज बिकॉज वेव वाई जो है इट इज अहेड देन द वेव एक्स ठीक है और you can also say if we just look at time t is equals to 0 so when the amplitude of wave x is 0 the other amplitude of y has a maximum displacement ठीक है so you can just write at t is equals to 0 x has 0 amplitude while y has maximum amplitude and that's the case on the other positions as well ठीक है so yeah if we compare जब एक का एम्पलीट्यूड जीरो है तो दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या है वो मैक्सिमम चल रहा है ठीक है State and explain whether the statement 2 is correct. The amplitude of the resultant wave is 0. So amplitude is the sum of the individual waves. अगर मैं जीरो पे देखूं तो y का एम्पलीट्यूड a है इसका जीरो दोनों का सम करूं तो क्या एम्पलीट्यूड जीरो के इक्वल आता है सो दैट मीन्स के द स्टेटमेंट इज रॉन्ग सो नो स्टेटमेंट is incorrect ठीक है so sure so this statement is incorrect क्योंकि देखो बेटा if we look at time t जीरो जीरो पे y का x का एम्पलीट्यूड क्या है जीरो ठीक है t जीरो पे x का एम्पलीट्यूड है जीरो y का एम्पलीट्यूड क्या है मैक्सिमम सो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है it is the sum of these amplitudes of the individual waves so it's going to be 0 plus a naught which is a naught which means the resultant amplitude is not 0 for that they need to have amplitudes which are equal and in opposite direction but that's not the case ठीक है so you can write at any instant at any time if one wave has zero amplitude other wave has maximum amplitude okay now next up the width of each slit in part B is decreased ठीक है तो ये जो गैप नजर आ रहा है ना वो कह रहे हैं ये गैप क्या किया है द width of each slit in part B is decreased by the same amount there is no change to the separation of the slit मतलब ए में कोई फर्क नहीं है सिर्फ ये जो गैप नजर आ रहा था ना ये और छोटा कर दिया ठीक है So describe and explain the effect, if any, of this change on the appearance of the interference pattern. ठीक है आप जितना गैप छोटा करते जाओगे वेव की जो डायफ्रैक्शन है वो उतनी ज्यादा होगी ठीक है उतना ज्यादा सर्कुलर वेव फ्रंट फॉर्म होंगे सो मोर डायफ्रैक्शन in waves. So since there is going to be
मोर डायफ्रैक्शन इन वेव्स। अच्छा, आपके पास क्योंकि ए की वैल्यू कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है, सो देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रिंज सेपरेशन। ठीक है, सो वी विल राइट नो चेंज इन फ्रिंज सेपरेशन। बाकी अगर आप गैप कम कर देते हो, ठीक है, तो गैप कम करने से लाइट की जो इंटेंसिटी होगी ना वो डिक्रीज करेगी। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी ना तो जो ब्राइट फ्रिंजेस की ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हो कि ब्राइट फ्रिंजेस विल बी लेस ब्राइट। ब्राइट फ्रिंजेस आर लेस ब्राइट as intensity of light decreases। सो बेटा डायफ्रैक्शन में जितना गैप कम करोगे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो उतनी डिक्रीज करेगी, जो फ्रिंजेस की ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। फ्रिंज सेपरेशन में कोई जो उसका गैप था उसमें चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि स्लिट सेपरेशन में भी कोई चेंज नहीं है, गैप स्लिट्स के दरमियान उतना ही है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, मतलब कुछ आइडिया अब आप लोगों को हो गया है इससे कि कैसे इनसे हमने मतलब डील करना है। ठीक है, एक ये वाला कर लें क्वेश्चन नंबर 6 कि एक ये वाला कर लें क्वेश्चन नंबर 6। Okay, so let's just do this one. Light of a single frequency is incident normally on a diffraction grating. An interference pattern of bright and dark fringes forms on the semicircular screen shown in figure 6.1. The light has a wavelength of 520 nanometers. ये स्मॉल n का मतलब क्या है? नैनो, राइट? और नैनो के लिए वी मल्टीप्लाई इट विद 10 की पावर -9। Separation of the lines in the grating is this। So मतलब a भी दिया हुआ है और लेमडा भी दिया हुआ है, और determine the total number of bright fringes formed on the screen। ठीक है, so we have to find the total number of bright fringes। So सबसे पहले n lambda is equals to a sin थीटा, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला। मैंने आप लोगों को ये चीज क्लास में बताई थी कि जब आपने टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस निकालने हैं तो उस केस में हम थीटा को मैक्सिमम कंसिडर करेंगे, थीटा की वैल्यू 90 लेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर, सो लेमडा इज 520 इंटू 10 की पावर -9 and the value of A is how much? It is 3.8 into 10 की power -6 and the value of theta will be 90। So sin 90, ठीक है, इस पूरे को आपने पुट करना है, क्या ये उधर जाके डिवाइड कर दो इस पूरे से, तो वी गेट द फाइनल वैल्यू। ये कितना आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू दैट वी गेट? 20 into 10 की power -9। So the value of n is going to be, it turns out to be 7 point something। n हमारे पास बेसिकली क्या बता रहा होता है? ऑर्डर बता रहा होता है ना, ठीक है। सो n इज 7.3, मतलब इसका मतलब n का nth ऑर्डर है 7, तो इसका मतलब है ऊपर 7 ब्राइट फ्रिंजेस होंगे। ठीक है, सो ये सेंटर वाला यहाँ पे 0 ऑर्डर है ना, तो ऊपर 7th ऑर्डर तक जा रहा है, तो ऊपर इस एक्सेस से ऊपर 7 ब्राइट फ्रिंजेस है और एक्सेस से नीचे 7 ब्राइट फ्रिंजेस हैं और एक सेंटर में है। सो 7 टाइम्स 2 इज 14 और 14 प्लस 1 विच इज 50। और मैंने जनरल फॉर्मूला क्या बताया था? 2n plus 1 to calculate the number of bright fringes, and that is going to be 15।
nth ऑर्डर इसलिए कैलकुलेट किए ताकि मुझे पता लगे कि किस ऑर्डर तक ऊपर फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर सेवेंथ ऑर्डर तक हो रहे हैं मतलब ऊपर 7 ब्राइट फ्रिंजेस हैं। अगर ऊपर 7 होंगे तो नीचे भी उतने सेम आते हैं, और ऊपर और नीचे वाले मिला के प्लस द सेंटर वाला, तो वी गेट 15 ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, द लाइट इज रिप्लेस्ड विद रेड लाइट ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आगे आपसे कहते हैं स्टेट वेदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट इज ग्रेटर देन, लेस देन और द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल लाइट। ठीक है, तो या रेड, पहली बात तो ये मुझे बताओ कि क्या रेड लाइट की वेवलेंथ जो है 520 नैनोमीटर से ज्यादा है या कम है? अब रॉय को बेस याद या विद ग्योर जैसे भी याद किया। ठीक है, सो रेड हैज द highest wavelength and it has the shortest frequency। ठीक है, so this one has the, since red has the greater wavelength then 520 nanometer, so इसकी जो frequency है वो क्या होगी, वो कम होगी। so frequency of red light is less than of 520 nanometer wavelength। ठीक है, so I hope this is clear। State and explain the effect of this change on the number of bright fringes formed on the screen। A calculation is not required। ठीक है, so he is asking you कि with number of bright fringes जो फॉर्म हो रहे हैं उनमें कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, सो लेमडा और एन का क्या रिलेशन है, मैंने क्या बताया था, अगर आपने दो क्वांटिटीज को स्टडी करना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, सो वन क्वांटिटी शुड बी ऑन वन साइड ऑफ द इक्वल साइन एंड द अदर क्वांटिटी शुड बी ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल साइन। ओके, so lambda is equal to a sin theta over n। ये ऊपर वाला जो है this is constant, so what is the relation of lambda and n? so lambda is inversely proportional to n। तो अब आप इसमें क्या बताओगे, आप इसको ये बताओगे कि red light has greater wavelength, has greater wavelength, फिर आप उसको ये बता दो कि लेमडा एंड एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है तो इससे क्या पता लगता है, लेमडा एंड एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेमडा एंड एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, hence less number of bright fringes are formed, hence less bright fringes are formed। I hope it's clear now। ये बात समझ आई है? ठीक है, ओके, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक ये वाला आप देख के कहना चाह रहे थे कि ये वाला करना है। ठीक है, तो अब आपसे वो ये कहते हैं कि 2 पॉइंट सोर्सेज ए एंड बी प्रोड्यूस कोहेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोहेरेंट मीन्स दे हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, so their amplitudes, wavelength, speed, everything is same। Okay, wave from A and B are emitted in phase and have wavelength lambda। Okay, the lines on figure 5.1 represents wave fronts
All the points on a wavefront are in phase on figure 5.1 marked with a cross. The position of an interference maximum. ठीक है सो अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि वी हैव टू मार्क ऑन द डायग्राम ठीक है कि where is going to be a maximum and the position of an interference minimum ठीक है तो मैक्सिमम हमारे पास जहां पे वेव्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी जैसे कि ये इधर ये और ये आपस में मीट कर रहे हैं यहाँ पे कौन से ऑर्डर की इंटरफेरेंस होगी इस पॉइंट पे ठीक है सो वी हैव टू लेबल दिस क्रॉस वाई सो दिस क्रॉस विल बी लेबल्ड एज वाई यहाँ पे जीरो ऑर्डर बन रहा है क्योंकि दोनों की वेवलेंथ सेम है यहाँ पे भी जीरो ऑर्डर बन रहा है मैं इधर जहाँ जहाँ पे ये मीट कर रही है ना वेव्स वहां पे मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है क्योंकि उधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है फिर उसके बाद वो आपसे ये कहता है कि ये मेरे पास क्या हो रही है इस लाइन पे जीरो ऑर्डर इंटरफेरेंस है ठीक है अच्छा इसका दूसरा और इसका ये पिछले वाला यहाँ पे मीट कर रहे हैं फिर इसका तीसरा और ये सो ये जो पॉइंट है ना ये यहाँ पे क्या हो रहा है इस इन पॉइंट्स पे फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पे जीरो ऑर्डर है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर क्यों है क्योंकि इस पॉइंट पे इसका एक वेव आगे है और इसकी एक वेव पीछे वाला मीट कर रहा है इसी तरह ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर है ठीक है ये क्या है ये भी फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है अब उसने कहा है बिटवीन एवरी टू मैक्सिमास वी हैव अ मिनिमा तो मिनिमा इन दो मैक्सिमम जो है यहाँ पे कहीं पे दरमियान में लगा देता हूँ इधर कहीं पे होगा मिनिमा ठीक है सो इसको द पोजीशन ऑफ इसको क्रॉस मार्क करके वी हैव टू लेबल इट एज जी ठीक है ये समझ आ गई जी रहा okay the waves in air have a wavelength of this yeah sure minima is formed between every two maximas ठीक है यहाँ पे मैक्सिमास है जहाँ जहाँ पे वेव्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे मैक्सिमा प्रोड्यूस होता है ठीक है यहाँ पे ये मीट कर रही है इसकी वे इसका एक वेव फ्रंट आगे है इसका एक पीछे है इसका आगे पीछे है तो ये पूरी लाइन जो है ये मैक्सिमा की है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ये जीरो ऑर्डर मैक्सिमा इन दोनों के दरमियान इधर मार्क कर लो इधर मार्क कर लो मेरी मर्जी है ठीक है तो उसने एक ही पॉइंट मार्क करने को कहा हुआ है The waves in air have a wavelength of this. An interference pattern is detected along a line parallel to AB and at a perpendicular distance of 140 centimeter from AB. So basically वो आपको कहते हैं कि ये इंटरफेरेंस फिनोमेना ही हो रहा है ठीक है सामने एक स्क्रीन लगी हुई है और कहते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर फ्रॉम ए बी सो ए बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनता है एंड दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन तो ये 140 मीटर ये उसने कैपिटल डी दिया हुआ है आपको लेम्डा भी दिया हुआ है स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट इंटरफेरेंस मैक्सिमा ठीक है सो ये जहाँ पे दो मैक्सिमास हो रहे हैं इसके दरमियान की स्पेसिंग x दी हुई है 0.12 मीटर फिर कैलकुलेट द सेपरेशन a of the sources A and B so we have to find the slit separation A कॉल एंड हो गई है ठीक है सो वी जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूला कौन सा लेम्डा इज इक्वल्स टू ए एक्स ओवर कैपिटल B so since we have to find small a make a as the subject lambda d over x d उधर जाके multiply x इधर लाके divide so अब values put करता हूँ lambda is 2.9 into 10 की power -5 d is the distance between slits and screen which was 140 meter
एंड x इज 0.12. ठीक है, तो ये पूरा पुट कर दो तो वी गेट 0.34 meters. I hope it's clear to everybody now. State the principal region of the electromagnetic spectrum to which the waves belong. So, what is the wavelength of the light? So, the wavelength of the light is 2.9 into 10 की power minus 5. ठीक है? So, this belongs to infrared waves. ठीक है? UVIMR. सो ये आपको जो मैंने रेंजेस बताई नहीं थी ना, वो आपको याद होनी चाहिए, ताकि अगर वो आपसे ये पूछ लेता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस इज हाउ वी आर सपोज टू आंसर. ठीक है, ओके. अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रैक towards an observer standing adjacent to the track as shown in figure 6.1. The train sounds its horn continuously as it approaches the observer. So it approaches the observer. ठीक है? So when it approaches the observer, तो हमारे पास उसके जो क्लोजर आता है तो नीचे माइनस का साइन आ जाता है. वो फ्रिक्वेंसी वाला फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, वी हैव टू यूज दैट फॉर्मूला. ठीक है, सो व्हाट वाज द फॉर्मूला? सो फॉर्मूला वाज एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी ओवर वी माइनस Vs times Fs. ठीक है, so this is the formula that we have already studied in the Doppler's effect. ठीक है, I am talking about this one. So F naught stands for the observer frequency, Fs is the source frequency, V is the speed of sound in air, which is 330 or 340 depending which value is given. Vs is the source speed, ठीक है, with which the source is moving towards the observer, and when towards है तो नीचे minus का sign, when it's away so it's a plus sign in the denominator. So we have to calculate the speed of the train. So let us just calculate the speed of the train, but for that we need to see what is the observer frequency and what is the frequency. So the horn emits a sound of constant frequency of 251 hertz. The frequency of sound heard by the observer is 291. So observer की frequency है 291, ठीक है, and the speed of sound in air मतलब v की value, observer frequency is 291 hertz, ठीक है. Speed of sound in air is 340 meter per second. So 340 over 340 minus Vs times and the frequency of the source. So Fs is 251. So we have to calculate Vs. ये पूरे का पूरा उधर चला जाएगा, 291 नीचे ले आता हूँ. So 340 minus Vs is equal to 340 times 251 whole divided by 291. So once we do this, 340 times 251 divided by 291, so it's 293.26. So it's 293.26. ये उधर ले जाता हूँ और Vs इधर ले आता हूँ, तो it's going to be 340 minus 293.26 equals to Vs. So we subtract and we get 46.7 meter per second, and we have to give the final answer to two significant figure. ठीक है, so please remember approaches the observer मतलब जब towards है तो फॉर्मूला ये होगा, जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो फॉर्मूला में नीचे माइनस की जगह प्लस का साइन आ जाता होता है. Now the train approaches and then passes the observer. The intensity of the sound heard by the observer varies with the distance d of the horn from the observer.
When the horn is at a distance x naught from the observer, the intensity I of the sound heard is I naught and the amplitude A of the sound wave at the observer is A naught. ठीक है? Figure 6.2 shows the variation with d over x naught of I over I naught as the train moves away from the observer. ठीक है? So train approaches and then passes the observer. So पहले train इसके करीब आता है and then train passes away from the observer. Okay? So what happens then? उसके बाद वो आपसे ये कहता है कि yeah. So with the distance d of the horn from the observer, so we can clearly see, ठीक है? So we can just clearly see कि जैसे जैसे distance बढ़ रहा है, intensity is decreasing because intensity is inversely proportional to the square of distance. ठीक है? इसीलिए जैसे जैसे वो बढ़ रहा है तो आपके पास इंटेंसिटी कम हो रही है. अच्छा, अब आपसे वो कहते हैं द एम्पलीट्यूड ए ऑफ द साउंड वेव एट द ऑब्जर्वर इज ए नॉट. कह रहे फिगर 6.2 shows the variation with distance of intensity. State the relationship between amplitude A and the intensity I for a progressive wave. So what is the relation between intensity and the amplitude A? So intensity is directly proportional to the square of the amplitude. ठीक है? So आपके पास जैसे जैसे So on figure 6.3, sketch the variation with d over x naught of a over a naught. ठीक है? Okay, so now we have to sketch the variation d of okay जैसे जैसे distance बढ़ रहा है तो अब हमने ये बताना है कि what is the effect on the amplitude of the wave. So when the at d is equals to 1, इसका जो intensity थी it is maximum. So at d is equals to 1, amplitude should also be maximum at 1. ठीक है? फिर उसके बाद अब जैसे ये 4 पे आता है अब इंटेंसिटी आपके पास पहले 1 थी फाइनल इंटेंसिटी कितनी हो गई है बेटा सो फाइनल इंटेंसिटी क्या बनती है 0.2 0.4 0.6 नहीं 0.06 राइट दिस इज 0.06 अब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था I1 over A1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू I2 over A2 का स्क्वायर. नाउ वी हैव अज्यूम्ड कि जब उसकी इनिशियल इंटेंसिटी 1 है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है 1. So now we have to when the intensity decreases to 0.06 so we have to figure out okay what is the amplitude A2. So let's just put the values in this. I1 is 1 over 1 का square, I2 is 0.06 over A2 का square, 1 over 1 is 1, ये A2 square इधर आ गया, equals to 0.06. We have to take square root on both sides and once you take the square root of 0.06, so what do we get? ठीक है? So square root of 0.06 is 0.25. तो इसका ये मतलब है कि when the distance is 4 at that time intensity was 0.06 but the amplitude will be 0.25. so 0.3 इधर है 0.25 इधर है कहीं पे so ये यहाँ पे है ठीक है अच्छा ना अब क्योंकि स्क्वायर है तो इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन इंटेंसिटी भी कम हो रही है और ये एम्पलीट्यूड भी कम होगा ठीक है अब क्योंकि इंटेंसिटी में भी थोड़ा अप्रॉक्सीमेट इसी टाइप का ही आप कह लोगे
ये. So this is how the curve will look like for the amplitude against the distance graph. I hope it's clear to everybody now. ठीक है, तो एक ये तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मतलब वो आ जाता होता है. ये तो CRO बेस्ड है ये वाला. लेट मी देखना चाह रहा था. Yeah, this one. Let's just talk about the question number 2 from this. Okay, this is the last question. After that, we're going to end the lesson. ठीक है? Two progressive water waves X and Y travel along a straight line from A to B. ठीक है? So the variation of displacement of the waves with distance from A at an instant in time is shown in figure 3.1. State the amplitude of wave X. So this shorter one is the X. So what is the amplitude? So the amplitude is 10 centimeter. So it's 10 centimeter. Both waves have frequency 16 Hz. Determine the speed of wave X. So we have to determine the speed of wave X. Frequency is given. तो वेव x का डिस्टेंस मतलब कि क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है. इसका क्या मतलब है? वेवलेंथ है कि टाइम पीरियड आएगी? Wavelength, right? So what is the wavelength of the wave? So the wavelength of the wave, so the distance to complete one cycle of a wave, and that is 0.4 meters. So we have to use the formula V equals to F lambda, frequency is 16 and lambda is 0.4. So 16 times 0.4 we get 6.4 meter per second. State and explain whether X and Y are coherent or not. ठीक है, coherent waves की definition क्या थी कि they should have a constant phase difference. ठीक है, so if you compare the crust of both waves, so this is the crust of wave X and this is the crust of wave Y. ठीक है, then this is the crust of wave X and again, so the distance between these crusts is equal. So can we say that they have a constant phase difference? So these two waves are coherent waves. ठीक है, so both waves have constant phase difference. Hence, they are coherent. Okay? So, अब हम अगला देख लेते हैं wave x and y superposed to form a resultant wave. On figure 3.2, sketch the variation of displacement of the resultant wave with distance from A at the instant of time shown in figure 3.1. So based on this, when these two waves, when they meet, so we have to draw the graph of the resultant wave, okay, how the resultant wave is going to look like. ठीक है? So yeah, let's just do that. Okay, अब बेटा, if ये 0.2, if we look at this point 0.1, what is the amplitude of wave x? It's 10. So amplitude of wave x is 10. And what is the amplitude of wave y? It's negative 20. So 0.1 pe, what will be the amplitude of the resultant wave? We have to add the amplitudes. So it's going to be 10 plus minus 20 and I get negative 10. Right? So 0.1 पे इसका amplitude कितना होगा? Negative 10. Okay? 0.2 पे दोनों का amplitude 0 ही है. So it stays at 0, it stays at 0. Then again at 0.3, this time it's going to be positive.
ओके पॉजिटिव 10 होगा सो 2 4 एंड 5 या अब इस पे हमारे पास एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 10 देन अगेन इट्स गोइंग टू बी दिस और 2 3 4 5 again it's going to be negative 10 and then between ठीक है so it's going to be एक साइनोसॉइडल वाला ही जैसे ग्राफ होता है हियर इज एम्पेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा एंड यू विल डू द सेम and this is actually okay okay I hope ये अभी अब आपको समझ आ रहा है ठीक है the intensity of wave x is ix the intensity of wave y is y use figure 3.1 ठीक है we have to use this figure to determine the ratio of intensity of x to the intensity of y ठीक है now we remember कि intensity is directly proportional to the amplitude square right okay so since they are directly and proportional का साइन खत्म करके if I add a constant k तो I x over I y can be written as k times amplitude of x का square over k times amplitude of y का square k वैसे कैंसिल आउट हो गया कांस्टेंट जो है ठीक है तो या फिर उसके बाद x का एम्पलीट्यूड कितना था 10 और y का एम्पलीट्यूड कितना है मैक्सिमम 20 so it's going to be 10 का स्क्वायर इज 100 20 का स्क्वायर इज 400 तो ये आ जाएगा 1/4 तो ये 1:4 या फिर 0.25 सो दिस मार्क्स मतलब आई होप आप लोगों को समझ आ गया है कि वेव्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में प्लीज प्रैक्टिस दीज वर्कशीट्स योरसेल्फ और गुड लक